of you will people will be joining in, but still we have a short program on the 72nd Republic Day celebration. It's an honor for all of us as Indians, and we got an opportunity, so we should not let it waste. So, welcome. CVMD is honored to have the great fitness people with us today in this small program. We have Auntie Google Auntie with us, as well as Nikki Pereira. She is also a fitness teacher, and we have Dev Narayan who has joined. Anita has joined in. They are all students. Sai Miraji has joined us. She is also right now into fitness. So we are going to make our country a fit country. So in today's program, we just have calculated a small hand-packed program here and there, bringing up the fervor of the Republic Day in us. With that, we will just start the small program, and we will start with a small dance. Till the time people will be joining us, they will keep on joining. So I'll keep on editing them. And this program, we will be showing it in our group also, CVMD. So those who will miss it out, hello, Sai Miraji. Welcome. Yeah, welcome, Raj. So Thank more people you. will be joining in. But Hello. yeah. So first we will start at the very onset today's program, the small program which we have planned for this Republic 72nd Republic Day. We'll start with the dance performance by Nikki Pereira because she's a little busy. She might be going out very soon. So with the introduction dance of hers, we'll start with that. So Nikki, how are you today and 72nd Republic Day celebration? Thank you so much, Rachna ma'am. It's always a pleasure to be part of your group and your event. Republic Days were going good. I have uploaded my kids' videos also. So when you mentioned about the event, I said I would love to perform with my daughter. So she's just coming and will surely love to be dancing for you all Yeah. So in before, dedication to a Republic Day. yes, very nice. So before we start, we'll have a little word with just few word with our Google auntie. She is also fitness at this age. She is without medicine, so it is really very inspirational to hear from her. How does she keep herself fit? So, auntie, over to you. So, if you could share your fitness tip with all of us. Auntie, you have to unmute your mic. Now you can hear me? Yes, yes, yes. Now can you hear me? Yes, yes. Perfect. Yeah, I'm 76 years only. Only Today you. I got up at 3 o'clock, left at 4 o'clock to go to Gorai Beach. Pinkathon meet was there. We ran for some time, then we did flag hosting, khaya piya, और 11 बजे घर पहुंच गए वापस. And fit, we all are fit in one way or the other, but because of my age, people think I'm very fit. I have no health issues as such. I don't suffer from anything. I don't take a single tablet, and social media has made me little famous. Otherwise, I eat little bit of junk food, and my eating habits are very disciplined. I don't miss a meal. I fast in a different way, but not regularly by missing a meal. And I don't get angry. I have control on my anger, and I feel anger and BP are proportionally connected. So if you are getting angry, you will suffer from BP. And if you once suffer from BP, it is not going to leave your body. And life has to go on, no tensions, because every living being has to face tension in their lifespan. Take it easy. Anything can happen. Natural calamity you can't avoid. Personal tragedies you can't avoid. But don't get angry with God. Don't get angry with your children. And try to be disciplined life. I'm pure vegetarian. I eat regular intervals. I drink a lot of water. I do a lot of exercise. I'm a mother of 3 children. When they were small, house used to be like running a marathon a day, taking them to different activities. Now that they are married, I have a lot of time. So I have joined different activities like dance,
aerobics, and walking. I love walking and I love talking. So that's it all about me. And God has been great. I have to thank God for whatever He has done to my health. So I have no complaints. Yeah. And all your blessings from youngsters, your blessings have strong power. So keep blessing. Surely, surely. It's amazing to hear. Anything else So, anybody wants to ask? yeah. First of all, Thank you. very Thank you. important. Anybody wants to ask me, I'm here to answer. Yeah. First, I want to share with all my viewers here that Auntie has said a very important thing, that we should never get angry. So getting angry gives that Try blood not to. pressure. Yeah, we should try always to stay happy and that smile on our face. So that will keep us healthy. So I think I try to do that Yes. too much. I don't know. I'm putting on a lot of weight for being too much happy all the time. So probably that can be disturbing, I think, Auntie. Is it so like that? That if you're too much Go on. happy all the time, so we'll put on a lot of weight also. Is it so? It's my Yes. personal question. So go on anger fasting. Do anger fasting for a week. See that you don't get angry for a week. You'll get used to it, and then you'll not get angry. Great. Thank you so much. Anything else I can say? I have lots to say. Thank you Yes, so yes. much. Today's your day. Yeah, we will ask you a lot of Yes. things. So first of all, we'll go to Nikki. Absolutely. I'm here. Yes. We'll first see Nikki's dance performance, and then we'll continue again with you, Auntie. So over to you, Nikki. Mic is mute, Nikki Padera. I want you to start with your dance performance. Sorry. Yeah. You can start. Yes, sorry. I was speaking, I did not see that it's mute. है मेरी ज़मीं अफ़सोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू Thank you so much. We're done. Thank you. Thank you. It was lovely to see you. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. It is in reality the performance which we call CVMD. CVMD is that caring mother the rocking performance. Thank you, Nikki, for that lovely performance. Absolutely stunning performance. Pleasure. And apt for today's Republic Day also. Thank you. Thank you so much. And thank you once again to everyone to watch this and my daughter. And happy Republic Day. We'll see you later for sure. So bye everyone. Yes. Happy Republic Day. Happy Republic Day to Bye all. bye. Thank you. Thank Thank you, you, Nikki. Thank you. Okay, so we have our guest also have joined us. Neeta Jogdan from Vaibhav Yoga Neuropathy Center. She is taking lot of yoga classes, and with the help of yoga, she keeps the people fit with from lot of diseases. There is no medicine here, so we'd like to welcome Neeta ji. Neeta ji, your camera. Can we see you, Neeta ji? yes ma'am. Yes. So here we मैम have. क्या मुझे 10 मिनट मिल सकते हैं? एक 10 मिनट मिल सकते हैं मुझे, क्योंकि चलेगा, मेरा चलेगा। एक पेशेंट है,
जस्ट एक्यूपंक्चर करके, मतलब वो अभी इमरजेंसी आ गया है, मतलब मैं नहीं बोला था, पर मुझे और आधा घंटा फिर से वेट करना पड़ेगा ना, इसलिए जस्ट 10 मिनट Okay, रेडी चलेगा है। चलेगा चलेगा यस चलेगा. मैम, थैंक We'll continue. Will you join us? Yeah. यू। यस मैम। Yeah. So we'll move ahead. We have our other two participants also joining. Dev Narayan, who is a young child. So Dev Narayan, I can't see your video. We need your videos also. Yes. So we'll move to Dev Narayan Chakrabarti, all the way from Assam, Guwahati, who will be singing for us a patriotic song. So over to you, Dev Narayan. Hello, my name is Devnarayan Chakraborty and I'm age of 9 and so happy Republic Day to all. Today I'm going to sing the song Vande Mataram. So should I start? Yes, 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 Dev Narayan. You can start. Yeah. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sufalam, Malayaj Sheetalam, Shasya Shemalam, Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Shubhra Joshna, Pulakitayaminim, Vallakusumita, Drumadala Shobhinim, Shuhashinim, Sumaduravashinim, Shukhadam Bharadam, Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Thank you. Wow, amazing, Dev Narayan. Thank you for that beautiful song. So, Dev Narayan, what did you do today? I saw your videos. You had celebrated at home. How was your Republic Day? Online Republic Day, or did you celebrate with your family members? How did you celebrate it today? I celebrated by march passing to our terrace, and then we just host our national the flag in we just host that very nicely, and we sang the also national anthem, and that was how we celebrate our today's Republic Day. Okay, great, great, great. Thank you, Dev Narayan, for sharing your thoughts. Do be with us. Sister, we have a lovely program today coming up ahead. So, thank you so much for that lovely song. We'll move ahead. We have our next performer, Sai Miraji. So, Sai Miraji, she will be singing for us a nice patriotic song. So, first of all, before starting the song, I would like to ask Sai Miraji that what is Republic Day according to you? Mic unmute. Unmute the mic. Hello, everybody. Thank you, Rachna ji. And for me, Republic Day is not just celebrating it in the house level or a society level. It should be from within. That republicness feeling should come from within. It should be for each and everyone. You should have that feeling for everyone. That and today actually there was a Pinkathon marathon. I think which Primala ji said she had gone, and the medals that have been made, I have made it. I have done the work. I have got that opportunity to make the medals with my hands. The seashells and that theme with the yeah. Thank you so much. Yes, Oh, yes. wow, lovely, lovely. That's wonderful, Sai Mira. So wonderful, wonderful. Thank you. So when she said that, I was reminded of that. And yes, Wonderful, wonderful. yeah. And so I need to sing a song right now. Yes. Please go ahead.
Actually, I'm not getting the lyrics right now. You want to Yeah. take? Rachna ji, Yeah, yeah. Rachna ji, just can you give me 2 minutes? Yeah, okay, okay, okay. I just Okay, I'll move ahead search for the with lyrics. Raj. Then Raj is also Sure, getting sure. ready. So Sure. Raj, can you just take up Raj and start with your small poem? And first of all, I would like to know what is Republic Day according to you, since we are today meeting for the 72nd Republic Day celebration. So what is Republic Day according to you? Good evening, everyone. Am I audible first of all? Yes, yes, very much, very much. So, good evening, everyone. Hello, my name is Raj Darji. For me, Republic Day reminds me of many things, like the freedom fighters who fought for us, fought for our freedom. But more than that, I think it reminds us of our rights and responsibilities towards our country, our duties which we should fulfill. It reminds me of democracy, which we are given. So we should bring those things into practice in our daily life. So Republic Day plays that role of reminding us what we are capable of. It highlights a lot of things for us. So we should try to get all those things inculcate with our daily activities, and we should work towards the betterment of our country, that our country develops in a better way, and hopefully the best country ever. So that's what Republic Day is for me. Correct, absolutely, Raj. So we can move ahead with your poem, which you have written. So do share with us. Yeah, sure. May I start? Yes. Uh, I wish to see humans in the coming future who cherish God, not religion or caste. We breathe having access to freedom with presence of nature surrounding us till last. Proper education provided to every child, bringing vibrant changes to our motherland. Justice given to every innocent individual. Strict law formation towards people with guilty hands. You're driving the country with shining desire in their eyes to bring innovation and development, working to make this dream come true, striving to enhance and inculcate more skills for fulfillment, a better world for the coming generation, more protected surrounding for everyone to live, people growing acceptance for one's choice, our country excelling in every field of life. Thank you. Wow. Lovely. So everything you have said in the small poem, that what exactly a country should be like. So thank you so much, Raj, for Yes. that lovely poem and your expression I and also your. want, Yes, yes, Raj, go ahead. can I add something? Yes. Uh, I've written this poem inspired by the Where the Mind is Without Fear by Rabindranath Tagore. Oh, So wow. his poem inspired me to write this poem. Great, great, great. I wanted to add that. Yeah, that poem always inspires me. Rabindranath Tagore's poem, Where the Mind is Without Fear. Lakshmi. Yeah, I always get inspired with that poem too. And that's about for his countrymen. So thank you, Raj, for that lovely poem. So we can move Thank ahead. you. Yes. In between, I would like to ask Primla Auntie, who is also there with us, that Auntie, what is your opinion about those youngsters who have such great feelings about their motherland? What would you like to say about them, that they are writing poems? What tip would you like to give to them? Because you are already experienced, you are doing a lot of runs and keeping yourself fit. But these youngsters were coming up with such ideas in their mind about their motherland, like Dev Narayan had already expressed with the song. So, what idea or suggestion would you like to give to these youngsters? So, Primla Auntie, over to you. Youngsters of today are very smart. They are educated better than what we were. Of course, I'm a science graduate of 1966, but we have to respect, and you people are doing a wonderful job. You all get involved with so many things that we never thought of, with so much of social media and so much of facilities available and so much push from your parents has kept you going. Please go ahead. Today's generation, you all are doing a wonderful job. But along with being very busy, do take care of your health. Walk for some time and do exercise for some time. And eat well. Don't just eat junk food, wafers and all. Eat food very well and don't trouble your parents. Thank you. Thank you so much, Auntie. Thank you. So we'll keep on asking you in between a lot of questions. So we'll not let you Absolutely. will not let you go in between.
So we'll move over to Saimira ji. Are you ready with the song? Can we take you right now? Saimira ji, she's there or she's having technical issues. Then we have Samriddhi who has joined us. So Samriddhi, Saimira maybe has having some problem with the lyrics and also let her do it. In the meantime, I'll move over to Samriddhi who is here. She'll be singing a song for us. But before the song, Samriddhi, I would like to ask you, what is Republic Day according to you, and how would you like to celebrate this Republic Day, or how would you like to make this 72nd Republic Day a memorable day for you, or something, at least because during this pandemic it has been everything different right now in the life. So Samriddhi, what is the Republic Day celebration according to you? So over to you, Samriddhi. First of all, good evening, everyone, and a very happy Republic Day to all. So, Republic Day, the time when our constitution came into the act, basically. But it's how we will celebrate it is when we will know the importance of our constitution, when we will come to know that how we would act according to our constitution, and then only we will be a responsible citizen. So, in my opinion, it would be really good that I would be able to explain the people who are younger than me about our constitution, make them know, not even younger than me, everyone, and make them know that how it's important for us to follow our constitutional rules so we can be a better citizen in every way. And of course, being a good human is really essential too. So I think acting in a very mature way and moving towards like showing our gratitude towards our country is a thing I can do to celebrate 72nd Republic Day in a Wow. special way. Well, great, Samriddhi. Great. Great to hear from you. So can we have a song from you? Yes, ma'am. I will be singing today Aisa Desh Hai Mera, the song that tells about how our country is. Just a small request to all. Please keep your mics mute. No, for others, I was telling, for others, not for you. Others to keep the mics Yes, okay. mute. Yeah, yeah. You can start. You can start.
Thank you so much. Thank you, Samriddhi. It was awesome to hear from you. Confused whether to go to a doctor or whether doctors will be treating us or will be directly giving that pills or medicines or whatever. XY, that fear from our mind can be removed by doing some simple yoga. So Neetaji will just share the tips. What are the daily things which we can do and keep ourselves healthy? So over to you, Neetaji. First, give us your introduction to our audience here and what you are doing to keep yourself healthy and fit and fine, because you are the health guru. So we want to listen from you. So over to you, Neetaji. थैंक यू रचना जी कितना सारा अच्छा बता रहे हैं आप। ओके, पहले तो मैं समृद्धि का आवाज बहुत सुंदर था, मैं ट्रीटमेंट दे रही थी, वो आवाज सुन के मैं भाग के आ गई ओके, बहुत अच्छा। ओके, नीता सुनावने मैं हूँ। मैं आज खास करके महिलाओं के लिए बहुत सारे टिप्स देने वाली थी, जेने करके योगा टीचर, नेचुरोपैथिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट, काउंसलिंग और डाइटिशियन, ऐसे बहुत सारे पैमाने पे मेरे काम अभी मीरा भाईंदर में चल रहे हैं। उसके साथ साथ अभी लॉकडाउन के बाद हमारा नेचुरोपैथी सेंटर ओपन हुआ है मीरा भाईंदर में, योग एंड नेचुरोपैथी सेंटर। इच्छा थी मेरी कि नेचुरोपैथी की बहुत सारी ट्रीटमेंट्स रहती है जो हम नेचुरल कहीं जाके, जगह पे जाके, वहां पे रह के वो ट्रीटमेंट हम करते हैं, पर वही चीजें हमारे इस सिटी में होनी बहुत जरूरी थी और उसके साथ साथ वो चीजें हम अपने घर पे भी कर सकते हैं। ये मुझे ज्यादा करके बताना था। ठीक है, हम कभी कहीं क्लिनिक नहीं जा सकते हैं तो एटलीस्ट हमें ये चीजें घर पे पता हो तो हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए कर सकते हैं। फर्स्ट है, थैंक यू सो मच रचना जी। आज जो है रिपब्लिक डे के लिए आपने मुझे इस प्रोग्राम के लिए इनविटेशन किया। वैसे मैं बाहर की गेस्ट नहीं हूँ, अपनी CVMD की ही मेंबर हूँ, आपकी फ्रेंड हूँ, तो ऐसे कुछ जरूरी नहीं गेस्ट करने की। जब भी मुझे भी लगे, आपको भी लगे, तो हम हमारे मेंबर्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए जो भी हमारे पास नॉलेज हो उसे शेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए थैंक यू सो मच फिर से एक बार। हम महिलाएं या बच्चे, अभी ये छोटा भी दिख रहा है मुझे, जिसने अभी गाना गाया था शायद ना, हाँ, तो इसके लिए भी अभी मैं बताऊंगी, बहुत सारे टिप्स मस्त बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी हम लोग जो है कोरोना की पीरियड से सब बहुत सारे डरे हुए थे, उसमें से बाहर आ गए हैं। फिर भी अभी हमें उसकी वजह से हमें ज्यादा पता चला है कि हमें अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए, हमें अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहिए, अपना स्टैमिना अच्छा रखना चाहिए, एनर्जी लेवल अच्छी रखनी चाहिए। तो इसके तौर पे योग, ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम, डाइट, हमारी दिनचर्या, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, मैं अच्छा तो खा रही हूँ, सब कुछ अच्छे से खा रही हूँ, पर मैं कुछ वॉक ही नहीं कर रही हूँ तो उसका कुछ मतलब ही नहीं है। मैं अच्छी नींद नहीं ले रही हूँ तो भी उसका कुछ मतलब नहीं है। मेरा अगर रूटीन में पेट अच्छा साफ नहीं हो रहा है तो भी हमारे हेल्थ में कुछ ना कुछ कहीं पे बदलाव शुरू हो जाते हैं। और हेल्थ के बदलाव जो है, एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, स्पॉन्डिलोलिसिस, जो बहुत सारी अभी लॉकडाउन के पीरियड में हम सारी महिलाओं को इसको फेस करना पड़ा। कारण उसका एक था कि हमारे सारे बच्चे, हस्बैंड घर से काम कर रहे थे, घर से पढ़ाई कर रहे थे, तो सारा बर्डन लेडीज के ऊपर आ गया था कि घर का काम, फिर ऊपर से काम वालियां भी नहीं थी, फिर बच्चे, ये सबका खाना पीना और अपना एक महिलाओं के लिए थोड़ा समय होता है, जो अपना प्राइवेट समय होता है, वो भी उनका चला गया था। तो इसीलिए वो मेंटली भी बहुत डिप्रेशन में जा रही है। और ऊपर से स्पॉन्डिलोलिसिस, ये सारा नेक और पीठ, ये सारा पोर्शन उनका स्टिफ होता जा रहा है। मैंने अभी लॉकडाउन में 90% लेडीज को ये प्रॉब्लम उनमें देखा हुआ है। तो उनके लिए सिंपल एक ट्रिक्स है, योगा के आसन है उसके लिए, उसमें फिजियोथेरेपी है, सब कुछ है। पर अगर हमारे पास कुछ समय ही नहीं क्लासेस जाने के लिए, या हम कहीं और ट्रीटमेंट लेने के लिए नहीं जा सकते हैं, तो घर में आपको क्या करना है, ये मैं सिंपल टेक्निक आपको बताने वाली हूँ। सबके घर पे एक तकिया होता है जो कुशन रहता है,
उस कुशन को हमें क्या करना है, बेड के ऊपर रखना है, एक ही तकिया रहे आपका, वो रखना है, थोड़ा कड़क लेना है, हल्का कड़क लेना है, और आपको नेक उसके ऊपर रख के बस राइट साइड और लेफ्ट साइड नेक को आपको 50 टाइम घुमाना है। अगर आपके घर पे योगा मैट है तो योगा मैट इस तरह से फोल्ड करके रखनी है और नेक के पीछे रखनी है और लेट जाना है, और जस्ट राइट साइड और लेफ्ट साइड। ये 50 टाइम सिर्फ आप करेंगे, 50 टाइम आपको सिर्फ करना है, और आप खुद ही देखोगे कि यहाँ का सारा स्टिफ जो हो चुका पार्ट है वो सब निकल जाएगा। उसके साथ स्पॉन्डिलोलिसिस में क्या होता है, सिर्फ नेक स्टिफ नहीं होती है, नेक के साथ हमारे हाथों में प्रेशर आता है, कभी किसी के हाथों में दर्द होता है, कभी किसी के पीठ तक पेन जाता है, और कभी कभी किसी को चक्कर जैसे भी महसूस होता है, जो हमारे नेक से कनेक्टेड ये नसें ब्लड सप्लाई करने के लिए बंद हो जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली चक्कर जैसे महसूस होता है या सर भारी लगता है। तो ये जो ट्रीटमेंट है, इससे आप 10 मिनट में आप फ्री हो जाओगे। इसे करना दिन में एटलीस्ट 3 बार है, पर 3 बार सिर्फ 5 मिनट के लिए करना है इसको। और जब भी आपको लगे आपका काम हो गया है, खाना हो गया, सब कुछ करने के बाद, क्योंकि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कभी करना है, बस 3 बार उसे, क्योंकि गोलियों का डोज जो होता है वो 3 बार होता है ना, वैसे इसे 3 बार हमें करना है। और ये आप फर्क देखोगे तो आपके हाथों में मूंगी आना, ये सारी छोटी छोटी चीज भी, अगर स्पॉन्डिलोलिसिस नहीं भी है हमें, तो भी अगर सिर्फ हम 5 मिनट के लिए अपने बेड पे लेटे हैं, हम बहुत बार मोबाइल को लेके लेटे हैं, तो मोबाइल को बस उतना समय 5 मिनट का हमें इस ट्रीटमेंट के लिए देना है, तो आप खुद देखोगे कि आपका नेक का जो पोर्शन है, ये सारा जो है वो स्टिफनेस पूरा निकल जाएगा। नेक पेन, हेडेक, जो भी स्टिफ होता है, आगे की स्टेप जो स्पॉन्डिलोलिसिस होते हो, कुछ भी नहीं होगा। एक बहुत बेस्ट ट्रिक है जो मैं लॉकडाउन में, ये बहुत सारे लोगों ने इसको अनुभव किया हुआ है और उनके पेन निकले हुए हैं, क्योंकि जो भी सारे मीरा भाईंदर में जितने स्टूडेंट है, 5-6 हजार स्टूडेंट का एक क्राउड है अपना, जो कुछ भी तकलीफ होती है ना, हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं ना कुछ कहीं पे जा सकते थे लॉकडाउन में, तो ये लोग मुझे ये प्रॉब्लम सब बताते थे और ये ट्रीटमेंट घर में सब कर रहे थे। ओके, सेकेंड ट्रीटमेंट और एक जो मोस्टली लेडीज लोगों के लिए जो है, यूरिन इन्फेक्शन के प्रॉब्लम होते रहते हैं, हीट शरीर में होता है, पीरियड हमारा आने से पहले हो, पीरियड जाने के बाद हो, या कभी किसी का मोनोपॉज आता हो, या कभी किसी ने पानी कम पिया हो, बहुत सारी चीजों से यूरिन इन्फेक्शन होता है, ईचिंग होता है, या सफेद पानी जाना, या पीरियड में जो प्रॉब्लम आते हैं, किसी को लंबे समय तक पीरियड चलता है, किसी को 4-5 महीने आते हैं, जैसे पीसीओडी के प्रॉब्लम हो, तो उन लोगों के लिए सिंपल ट्रीटमेंट है जो अभी हमारे क्लिनिक में तो है ही। हमारे क्लिनिक में एक मिनिमम चार्ज, हाँ, हमारे क्लिनिक का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये है कि कम रुपए में आपको ट्रीटमेंट मिले, जैसे 100 रुपीज, 50 रुपीज, 200 रुपीज, इसके ऊपर किसी के भी चार्जेस नहीं है। तो ये जो है कटी स्नान या हिप बाथ थेरेपी होती है, ये बहुत बेनिफिट देती है वीक में या मंथ में एटलीस्ट 5 दिन हमें तकलीफ नहीं है तो भी आप लेंगे तो आगे होने वाली परेशानी। और यही चीज अगर हमें घर पे करनी है, अपने साइज का एक टब लेना है, जो भी टब आपको मिले वो टब आप अपने साइज से थोड़ा बड़ा, और उसको आपको उसके ऊपर रख देना है, और उसमें आपको आपकी नाभि से लेके आपके थाइज भीगे उतना पानी रखना है, और आपको सिर्फ 5 मिनट इसमें बैठना है, स्नान करने से पहले, बाद में, या कभी भी दिन में, पर 5 मिनट इसमें आप बैठेंगे, सिर्फ 5 दिन बैठेंगे तो यूरिन इन्फेक्शन के प्रॉब्लम पूरी तरह निकल जाते हैं। ये ट्रीटमेंट कम से कम 17 से 18 लेडीज ने किया लॉकडाउन के पीरियड में, ये ट्रीटमेंट उन लोगों ने किया, और सच में मतलब उस चीज के लिए वो हर बार डॉक्टर के पास जाते थे, हर बार डॉक्टर के पास जाके 5 दिन की मेडिसिन खाते थे, और मेडिसिन जो है ऑटोमेटिकली और हीट ही पैदा करता है, आपको उस समय के लिए राहत देता है पर हिट या हमारी बीमारी दबा देता है। तो इसीलिए ये नेचुरल थेरेपी जितना आप करोगे उतना आपको बेनिफिट ज्यादा होगा, और उसके साइड इफेक्ट कुछ नहीं होंगे और फायदा ही होगा। ओके, तीसरी एक ट्रीटमेंट है, तीसरी ट्रीटमेंट लोअर बैक का पेन। बहुत सारे लोअर बैक और उसके कनेक्टेड साइटिका पेन, जो मैंने देखा हुआ है कि साइटिका जितने लोगों ने, जिनके घर पे काम वाली थे और काम वाली लॉकडाउन में बंद हो गए, तो उन सब लोगों को साइटिका का पेन ज्यादा लगा हुआ है, क्योंकि कभी सामने झुक के काम करने की आदत नहीं थी, या ज्यादा प्रेशर आ गया था
पीठ के ऊपर, जो लंबे समय तक जो भी बच्चों की इच्छा हो, बच्चों को अच्छे, क्योंकि लॉकडाउन में मैंने देखा बहुत सारे जन ने बहुत सारे रेसिपीज बहुत सीखे कि जिनको हॉबी थी अपनी खाना बनाने की, जो हमने दबा के रखी हुई थी, पर उस समय थोड़ा समय मिला तो हमने वो सब पूरी कर ली। तो ज्यादा घंटे तक हम किचन में खड़े रहे हैं सबको खुश करने के लिए, अपने घर वालों को खुशी से खिलाने के लिए। तो उन लोगों को बहुत सारे बैक पेन और साइटिका पेन ज्यादा आए, क्योंकि खाना तो बनाना है, काम भी करना है, सब कुछ करना है, वो सारा एक्स्ट्रा बर्डन बॉडी के ऊपर आया था। तो साइटिका के लिए सिंपल ट्रीटमेंट जो है, जो आपको अपने किचन में ही करनी है। हमारे यहाँ पे फिजियो योगा थेरेपी तो होती है, वो 5 दिन की ट्रीटमेंट से साइटिका पेन निकल जाता है। पर इसके अलावा आप घर पे क्या कर सकते हैं, या कहीं हम गए हैं और हमें तुरंत पेन आ गया है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो एक सिंपल टेक्निक है जो आपको सिर्फ खड़े होना है, जो हमारा, और हम खाना बनाते बनाते उस ट्रीटमेंट को करेंगे। हमें एक अलग समय नहीं चाहिए कि अरे हाँ मैं अलग समय निकालूं, कभी करूं, क्या करूं, कोई जरूरत नहीं है। आप किचन में खाना बनाते बनाते, किचन में गैस पे आपने सब्जियां रखी हुए हैं, वहां पे आप खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे वैसे ही आप ट्रीटमेंट करोगे। जैसे आपने, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैंने सिर्फ खड़े होके आपको राइट वाला पैर पीछे उठाना है, फिर लेफ्ट वाला पैर पीछे उठाना है, राइट वाला पैर पीछे, लेफ्ट वाला पैर पीछे हवा में। ये जो पोस्चर है ये आपको 20-20-20 के 5 सेट करने हैं। तुरंत साइटिका की नस जगह पे आ जाती है, खुल जाती है। अगर समय है, ज्यादा अच्छा है, तो आप घर पे कहीं और जाके आराम से कर सकते हैं। पर लेडीज के पास मोस्टली, हमारे पास समय होता ही नहीं है, ये लाइन तो हमारी रहती है। पर उसके लिए भी यह है कि हाँ मैं खाना भी बना रही हूँ, घर वालों को खुश भी रख रही हूँ, और मैं अपनी ट्रीटमेंट भी कर रही हूँ। क्योंकि हम सारी महिलाएं होती हैं, ज्यादा करके फोकस अपने बच्चे, अपना घर, हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारे रिलेटिव, आजू बाजू वाले सबके लिए ध्यान देती है, पर अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। अपने हेल्थ का ख्याल बहुत कम रखती है महिलाएं। पर इसके लिए मैंने ये टेक्निक निकाले हैं कि अपने लिए अलग समय भी मत निकालो, पर इन चीजों को सिर्फ 15 मिनट हम अपनी हेल्थ के लिए, 15 मिनट, 5 मिनट नेक एक्सरसाइज, 5 मिनट कटी स्नान जो आपको टब में बैठना है, और 5 मिनट आपको किचन के प्लेटफॉर्म के यहाँ पे खड़े होके ट्रीटमेंट करनी है। ये 15 मिनट अगर हम ये ट्रीटमेंट करते हैं अपने लिए, वो 15 मिनट 24 घंटे में निकालते हैं, तो आप ना 80% बीमारी से दूर रहेंगे। 80%, क्योंकि नेक का पेन है वही हमें पीछे पीठ की तरफ लेके आता है, हाथों की तरफ लेके आ जाता है, हेडेक हो जाता है, ये सारे सर के जो भी माइग्रेन हो जाता है, ये सब चीजें नेक प्रॉब्लम की वजह से हो जाते हैं। दूसरा है साइटिका की वजह से पूरा नीचे पैर हमारा नमनेस हो जाता है, पैर में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। और कटी स्नान जो मैंने बोला है, जो यूरिन इन्फेक्शन, इंटरनल ऑर्गन जो हमारा यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, हमारा ब्लैडर है, उनके ऊपर उसका इफेक्ट होता है, उससे कनेक्टेड हमारे किडनी है, उनके ऊपर इफेक्ट होता है। तो ये 3 टेक्निक से हम अपने पूरे हेल्थ को फिट रख सकते हैं, इन सारी बीमारियों से हम दूर रख सकते हैं। तो इसीलिए इन छोटी छोटी चीजें हैं जो नेचुरोपैथी की है, नेचुरल चीजें हैं, जो हम क्लिनिक में नहीं, हम अपने घर में ये कर सकते हैं, पर ये करनी है। हमें पता सब होता है पर हम करते नहीं हैं। तो इसके लिए सिर्फ आज का जो दिन है हमारा 26 जनवरी का, तो हम ये तो सोच सकते हैं कि आज के दिन में हम सिर्फ अपना ध्यान रखेंगे, सिर्फ 15 मिनट, और इन टेक्निक को अपनी दिनचर्या में डालेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने जो भी छोटे से टिप्स दिए मैंने, उसके लिए आपने सुना, इसलिए थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू रचना जी, जो मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू नीता जी। आपने जो ट्रिक्स बताए ना, वो एक्चुअली हाउसवाइफ नहीं, जो टीचर्स भी आजकल सिर्फ बैठे बैठे पढ़ा रहे हैं, सिर्फ ये कुर्सी और ये लैपटॉप, बस और कुछ नहीं, जगह से हिलते भी नहीं है, बस सिर्फ लैपटॉप। और तो बैक पेन तो मेरा भी बहुत होता है, ऐसे बैठे बैठे बच्चों को नॉन स्टॉप पढ़ाते हुए, और फिर अपना प्रोजेक्ट बनाओ, प्रेजेंटेशन बनाओ, सब कुछ बैठे हुए ही है। वो चलना तो एकदम ही बंद हो गया है, तो वो चलते मेरा भी बहुत बैक पेन। तो आपने जो टिप्स दिया, थैंक यू सो मच। तो जो भी टीचर्स हमारे सुन रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, नॉट ओनली हाउसवाइफ, सारे टीचर्स के लिए भी ये टिप बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो हम थोड़ा सा लैपटॉप के सामने भी अपने पैर को स्ट्रेच कर दे, जैसे नीता जी ने बताया, इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। सो थैंक यू नीता जी। आपने आज आपका ट्रीटमेंट का चल रहा है तो भी आपने टाइम निकाला CVMD के लिए। इट इज रियली एन ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस। So it is really nice to see every time whenever CVMD आपको कभी भी बुलाते हैं, उठा के लेके आ जाते हैं। आपका इतना
बिजी स्केड्यूल रहते फिर भी आप अपने टाइम दे देते CVMD को. थैंक यू सो मच. मैम थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. अपनी CVMD फैमिली है, हम फैमिली मेंबर्स हैं और अपने लोगों के लिए हमेशा थैंक यू मैम. Thank you, thank you. So, anyone would like to ask anything to Neeta ji before she moves out because she's very busy. Primla ji, if you would like to ask something to Neeta ji, she's here. Primla, No, lot of I don't. your fitness tips and all, anything. Would you like to ask her anything I- regarding that? Naturopathy, she's into that. Okay मैम. I can't get connected. Oh, okay, okay. Connection is Not getting connected. okay, okay, okay. ओके मैम. चलेगा, मिलेंगे, चलेगा. जरूर मिलेंगे और कॉल कर सकते हैं आप कभी भी, कुछ भी रहेगा जरूर. हाँ, आपके कांटेक्ट नंबर आप चैट बॉक्स में दे दीजिए नीता जी. यस मैम. हाँ, चैट बॉक्स में Yes, ma'am. जिसको भी कांटेक्ट करना रहेगा आपसे पर्सनली भी कांटेक्ट यस कर. मैम. हाँ, ओके. वैसे तो मेरे पास है, कोई मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं दे दूंगी. हाँ, तो जरूर जरूर मैम. ओके. थैंक यू सो मच नीता जी. So let us move ahead. Can you hear me, Rachna? Yes, Primla ji, I can hear. Rachna, can you hear me? Yes, 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 Primla ji. Okay, I was so happy to. Yeah, I was very happy to hear that yoga teacher, Yes. and she gave a fantastic tips. But don't stop walking, as you said. Your walking has stopped. Yes. Those 15 minutes are for good exercise at home, but walking is outside for the fresh air. Now everything has opened up, so please walk for some time. Okay, okay, okay. Can you Yeah. hear me? Yes, Yeah. yes, we can hear you, Okay, but we okay. can't see you, auntie. Your camera. I know. I don't know what has happened to my video. Okay, okay, okay. Anyway, we can hear you very nicely. But yes, it's Now true that we you should. can see me. Yes, we can see you. Now you can see me, na? Yes, yes. Yeah, I'm a dumbo with my this live program. I still have to learn quite a lot. So scared I lost the contact. No, no, not at all. Please continue walking every day. Yes, surely, surely. If not Yes. outside, walk at home. Yeah. So those of you who are hearing, please Thank you. remember the tip that which Primla auntie also gave, shared with us, that walking is a real good exercise. Without walking, you cannot keep yourself fit, or else you will grow breath-wise, you will not be able to grow lengthwise. Yes. So the You walking, don't have to pay anything for your walking exercise. exactly, exactly. So thank you so much, Rimla ji. We will move ahead to Saimira ji. I hope Saimira ji, your technical this thing is solved, so we can have. Yes. So Saimira ji's wonderful song will move ahead. Please bear with me. Actually, I'm not a good singer, but just trying. Yes, yes. Okay. Samira, where do you stay? I stay in Mira Road, auntie. The lyricist is Anand Bakshi, and the singer is Anuradha Podwal. I think you must have got the song in your tongue right now. The song is Har Karam Apna Karenge. If anyone wants to join, can join me. We can't see you, Saimira. You can't see me? Actually, because I'm seeing the lyrics, maybe that's the thing. I'm seeing the lyrics on my mobile. Now you can see me? No, not yet. करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है, ऐ वतन महबूब मेरे,
तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। आ आ Thank you. Wow. Superb, superb. That was amazing. I know you are not a singer as such, but still you are singing so nicely. I didn't know you have a lovely voice, Saimira. You should continue singing like that. Thank you. I Thank think you I've so heard you much. singing for the first time. You do a Thank lot you of so other much. activities, crafts and all, but I heard you singing for the first time. You have a lovely voice. Thank Thank you, Amazing. Rachna ji. Thank you so much. Thank you for Can I ask sharing. something? Samira, were you there in the morning today? Were I you was there not for there. like Golai Beach? You No, were I not was there. not there. Okay. I actually, Priyanka, Yes, yes, yes. That was Mr. Kapoor's. Remember, we had met Primla auntie with Gehna Mera. I'll ask Primla auntie that today early morning you woke up at 3 o'clock. So what is your regular timetable? I'm really surprised. I really cannot understand. How do you manage? What time did you go to sleep that you got up at 3 o'clock? I went to sleep around 11:30, kept an alarm, and then I got up because back of your mind, you know you have to get up. So you will not neglect the alarm. And then I'm very particular. I've been attending marathons and we have to get up early and leave early. So I'm used to it before pandemic. So getting up was not a problem. And बुड्ढे लोग ऐसे मेरे जैसे उम्र के, they don't get sleep early. But then we make up. Now today I sleep very early because those timetable has to be fixed, minimum 6 hours average. So yesterday if I slept for 3 hours, today I sleep more longer time. I sleep early. It will come automatic. My eyes will start closing. Okay. So I'm after all a human being. Yeah. I was really wondering. और अभी pandemic की वजह से my aerobics and dance and everything is closed. So I want to tell everybody, I do मेरा घर का काम झाड़ू पोछा अभी तक. It's like an exercise. I don't take it. I don't feel ashamed कि मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ. It is part of the exercise. I walk. I cook my own. I've got a small house. I do my dusting, and I take it as not as a challenge, but as a pride that I will continue to do it as long as my body permits me. Wow. So Simply amazing. it's a blessing. It's a blessing. I am not feeling proud. I believe strongly in destiny. 1 second can shatter your dreams. So just go on doing the work. God is there with you. Superb, superb. It's really nice. 6 to 8 hours sleep. Yes. Disciplined life. Don't get angry. आपके बच्चों के साथ गुस्से मत करो. Even if they are angry, they are बच्चास. आपके बुड्ढे माँ बाप के साथ गुस्सा मत हो. They are more experienced than you. If I get angry, I do get angry. After all, I'm a human being. So I just feel, अरे मेरा ही तो बच्चा है. He's my creator. So I don't get angry. And if I घर पे बड़े हैं, तो we don't get angry with them because after all, they are Buddhas. So just control. That's it. I swear I control my anger. Really nice to listen Everybody from say- you. And it's really nice that Thank you. whatever tips you're sharing, it's like we really need to follow that daily in our day-to-day life. And if we need to live healthy.
So we got really lovely See, and that amazing tips. that yoga teacher said कि घर का काम करके ladies थक गई हैं, कोई थका नहीं है, कोई नहीं, nobody was tired, but only yes, mental torture was there. Financially, everybody was upset. There was no income or less income. So back of your mind, the tension was more than doing jharu pocha. It was not the jharu pocha which was troubling. It was the mental torture of finance. So which has taken care of now. Everybody's gone back to normal. So from ant to elephant, face the problem, face with a smile. It increases your face value. You look beautiful like I do at 76. Yes, true, very true, very true. So thank you so much. Samriddhi, can we have a song from you before we wind up today's program because it's already late? The mama just came from office and she was willing to sing a song, she told me. Oh, wow. Great, great, great. Yeah, she just came from office, then I told her about it. So she just asked for 2 minutes. Is it possible? Okay, 2 minutes. Yeah, we'll take 2 minutes. 2 minutes. We'll wait for her. Okay. In the meantime, Auntie, can you show us the medal which Saimira ji has made for you? Because we that time couldn't hear you because you were muted. I don't know how. The medal which Saimira has made. Of course, I know Saimira is a very good crafts teacher. She teaches. She's having her own. Wow, Saimira is having her own classes also, crafts classes. But due to pandemic, there were a lot of Okay. this thing. She's teaching students. We small all kids. love the medal. Yeah. We all love the medal. It was really very, very beautiful medal. Wow. Thank you. Thank Actually, you so thanks. thank you so Thank you so much for it giving was us a very lovely medal. At least this medal will not get thank you, rusting. See, my old medals have started rusting. So this medal will not get Oh. rusted. Great. I love the medal. Thank Everybody you loves the so much. Thank you so much, Auntie. Thank you so much. medal. Actually, it was another team where I had joined, and within a short period of time, they gave me, I had to make 80 something. So I said Yes. 80 medals doing so much. So we were a team of four of us. We Okay. divided ourselves and we made this. Okay. But the main concept was Very given to beautiful. me. I thank Priyanka for giving me that opportunity, and so You've this done a thing came wonderful out. job. They Yeah. told me, Good, Steve, I came live with you thank all. you so much. Otherwise, I would Thank you have so not much. known you. Hello. Very nice, I came. Thank you. Thank you. I told Thank you my so much, guests Auntie. come after 8 o'clock. Yeah, good, 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 good. So we could see both the maker as well as the receiver of the award, both together in the same platform. Good. Congrats. So we have Sunita ji with us. She'll be singing. So it's lovely to have you, Sunita. Sunita ji, she'll be singing. Happy Republic Day, all of you. Yes, happy Republic Day. Republic Day also you are working. It's nice. That's the fervor of Republic Day. काम Yes. करते रहो, काम करके Republic Day मनाओ. Great, great. तो अभी Yes. आज आप क्या सुनाएंगे हमारे लिए? घर चले हम फिदा जानो तन साथियों. Okay, okay. Okay, can I start? Yes, yes, yes. हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. तेरी हम फिदा जानो तन साथियों, हमारे हवाले वतन साथियों. तेरी हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों.
साथ थमती गई नशे जमती गई दिल की बढ़ती तो ना रुकने दिया बढ़ गए जब हमारी तो कुछ जम गई कर की मारी कहानी न रुकने दिया मरती मरती लगा हाथ बन साथियों अब तुम्हारी हमारी लगन साथियों कर चले हम फिदा जानतन साथियों अब तुम्हारी हमारी लगन साथियों जिंदा रहने के मौसम के दामन जाने मेरी रोज आती नहीं हुस्न और इश्क दोनों दुरुस्तता करे वो जवानी क्यों हुई नहाती नहीं आज धरती बनी है दुल्हन साथियों अब तुम्हारी हमारी बदन साथियों कर चले फिदा जानतन साथियों अब तुम्हारी हमारी बदन साथियों अब तुम्हारी हमारी बदन साथियों कर चले हम फिदा जानतन साथियों अब तुम्हारी हमारी बदन साथियों Thank you so much. Lovely. Thank you, Sunita ji. That was amazing. And that too, directly from work, you came and you joined us. So nice. This is called patriotic fervor in you, inside you. So it's lovely to have Thank you so much. today's, since we have come to the fag end of the program, and it was a wonderful program. All of them have joined in at short notice because we were in the decision that whether we will have offline or online program. Relating to that, finally we decided we will go online, online karke, because in CVMD we have a lot of teachers, doctors who considered that we will be online. Right now it's becoming offline until and unless you have some emergency work and all. It's better to be at home. Till now, all suggestions and all taken into care and consideration, and we decided that we'll be online. So at short notice, you all joined in. Thank you very much for the wonderful program, and thank you to our guest, Primla ji. Thank you so much. Thank you so much for Thank you inviting so us. much. Thanks a lot. Thank you for inviting Thanks us. a lot. Thank you so much. Those that joined, some of them had joined, but they had to leave early. So we'll finish today. Thank you so much, Rajna ji, for God inviting bless us. you. Yes, yes. Thank you all for joining. So we'll end the program with the song Hum Honge Kamyab. So let's Sure. start the song. 1, 2, 3, start. Where I will ask Samriddhi to go and we will all continue with her. Samriddhi and Sunita.
We will follow them. हम होंगे कामयाब, हम होंगे होंगे कामयाब, कामयाब हम कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम We shall चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ लेके हाथों में हाथ, तो में हम हम चलेंगे हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। Okay, thank you. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in our heart, I do believe that we shall overcome someday. Thank you, Saimira. Thank you, everyone. Thank you very much for the lovely evening. It was wonderful to celebrate with all the amazing people. Online Republic Day. Thank you. 72nd Republic Day was amazing with all the lovely people around. And even those who are watching us also will be enjoying the 72nd Republic Day. So, good night. Have a nice day. Have a nice year ahead. Best wishes to all of you.